Hello everyone, can you see and hear me? All right, hi, hello, good afternoon, and welcome. hmm. Hi Triranga, hi Alpesh, hi Ayushi, hi Nishita. All right, hello everybody. वेलकम टू द 24th अप्रैल एडिटोरियल. आज मंडे है और इस वीक का एडिटोरियल का पहला सेशन है. सो आई होप आपने पहले जितने भी एडिटोरियल्स हैं उनके अभी स्पेशल सेशन में क्विज नहीं हो रहे थे, तो आई होप दैट यू हैव स्टिल बिन रिवाइजिंग ऑल दीज एडिटोरियल्स. क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका इस पूरा वीक special session mein you will just have quizzes. Okay, so make sure that you are revising all the editorials. koi bhi editorial main chhodungi nahi, and you will be asked questions based on vocabulary of the editorials that have been done previously. तो इस वीक हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं इन आवर स्पेशल सेशंस. जितने भी टॉपिक्स जो भी हमने किए हैं एंड जिनके क्वेश्चंस एक भी नहीं हुए हैं, नाउ इज दिस वीक इज डेडिकेटेड कंप्लीटली टू क्विज. सो या आज बहुत ही अच्छे अच्छे सेशंस हैं अल्पेश, एंड स्पेशली फॉर द वॉरियर्स बैच and people in general as well. It is going to be exciting day, and this entire week in fact is going to be exciting for most of you. So let's get started. यही पॉजिटिव नोट से मंडे को स्टार्ट करते हैं हम आज का एडिटोरियल. और एंड बिफोर आई स्टार्ट द एडिटोरियल, मेरा टेलीग्राम चैनल ये है जिसपे मैं अभी के अभी बताने वाली हूँ दैट आई एम लाइव. ऑल राइट, सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल को, तो यू सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई will be updating everything about the class. सारे क्लास के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं सारे इस सेशन इस चैनल पे होती है. ऑल द क्लास डिटेल्स इज डिस्कस्ड इन दिस चैनल. सो अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो यू कैन सिंपली टाइप वैष्णवी. I hate typing names or writing names in small letters, but that's how it is over here. So um, दिस इज द नेम ऑफ माई चैनल. अगर आपको QR कोड स्कैन करने से या टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टाइप दिस. अगर आप ये टाइप करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मैं जरूर दिख जाऊंगी. ओके, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज डे विद एक्साइटिंग वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स हैं आज हमारे पास एंड मोस्टली रिलेटेड टू लीगैलिटी, लीगल अफेयर्स, लीगल मैटर्स एंड लीगल वोकैबुलरी है. हाय मानस, हाय उजमाकी. उजमाकी सिंह आ जाता है QR कोड से. ओके, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं आता है, नहीं आता है QR कोड स्कैन करने से. बट इफ दैट इज द केस, थैंक यू उजमाकी फॉर लेटिंग मी नो. आते हैं डेफमेशन. सबसे पहला वर्ड जो आप लीगल रीजनिंग में बहुत ज्यादा पढ़ोगे, ये वर्ड डेफमेशन. डेफमेशन, डेफमेशन. आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ डेफमेशन. तो the action of damaging the good reputation of someone, slander or libel. Okay, so basically किसी का अच्छा reputation पे लांछन लगाना, आरोप लगाना, उनका reputation बर्बाद करना, लांछन लगाना, if I'm
right? आई थिंक दैट इज द वर्ड, हिंदी वर्ड फॉर इट. इफ आई एम नॉट देन प्लीज डू करेक्ट मी. लेकिन मेरे हिसाब से डेफोमेशन क्या है? कोई भी इंसान उनका रेपुटेशन खराब करने के लिए जो भी आरोप लगाए जाते हैं जिससे उसका रेपुटेशन बर्बाद हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डेफोमेशन और स्लैंडर और लिबल, यू कैन ऑल्सो से. नेक्स्ट वर्ड इज पेरिल्स. पेरिल्स का मतलब serious and immediate danger, something that is he was left in perils. That means वो बहुत ही बुरी स्थिति में, उसे डेंजरस सिचुएशन में उसे छोड़ दिया गया था. एंड ऐसी सिचुएशन में जो अभी डेंजरस है, ठीक है, नॉट समथिंग दैट विल बी डेंजरस इन द फ्यूचर या पास्ट में डेंजरस था, इट इज डेंजरस नाउ. सो पेरिल्स इज बेसिकली सिचुएशन दैट इज सीरियस और डेंजरस और हार्मफुल. ऐसे टाइप के सिचुएशन को पेरिल्स कहते हैं, राइट? पेरिल, पेरिल एंड प्लूरल इज पेरिल्स. डॉजी, डॉजी का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल. डॉजी इज अगर देखा जाए तो ये स्लैंग होता है, बट नाउ डॉजी इज ऑल्सो जनरली यूज्ड फॉर फॉर्मल पर्पसेस, बहुत कम लेकिन यूज होते हैं. तो डॉजी का मतलब ऐसा चीज जो थोड़ा स्लाई टाइप होता है बेसिकली. कुछ भी ऐसी हरकत जो डेफिनेटली जिसको हम सीधा सीधी या अच्छी हरकत नहीं मानते हैं, डिसऑनेस्ट हो सकता है या अनरिलायबल. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉल आता है कस्टमर केयर का और उस कस्टमर केयर में आपसे आपके ट्रांजैक्शन आईडी के साथ आपका सीवीवी भी मांगा जा रहा है, सो द कॉल इज डेफिनेटली डॉजी इन दैट केस, है ना? डॉजी हो गया केस in that case. All right, moving on to the next word. Okay, नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन. कन्विक्शन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है फॉर्मल डेक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ जूरी और द डिसीजन ऑफ अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस. ओके, दैट इज कन्विक्शन. दैट किसी को गिल्टी घोषित कर देना बाय द जूरी या जज ऑफ अ कोर्ट या जूरी मेंबर्स. इट इज बेसिकली अगर वो घोषित कर देते कि ये इसने ये इस पे जो आरोप लगे हैं वो इसने किया है, वो सही आरोप है, सो दैट इज कन्विक्शन. ओके, सो बेसिकली कन्विक्ट करना किसी को मतलब किसी को गिल्टी ठहराना बाय डेफिनेटली द कोर्ट, नॉट अ नॉर्मल पर्सन. इफ अगर मैं आपको बोलूं कि आप गिल्टी हो ऑफ लाइकिंग माई क्लास ओके, वेरी वेरी लेम जोक, लेकिन ठीक है. तो बेसिकली दैट इज नॉट कन्विक्शन, बट कन्विक्शन वुड बी समथिंग दैट इज डन बाय द कोर्ट, राइट? अगर कोर्ट ने कोर्ट के द्वारा की गई है, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन की गई है, घोषणा की गई है, दैट इज कन्विक्शन. कन्विक्शन भी आपको पता ही होगा डेफिनेटली. क्वांटम इज नॉट, अब हम फिजिक्स के सेंस में नहीं बात कर रहे हैं. क्वांटम इन दिस सेंस इज अ रिक्वायर्ड और अलाउड अमाउंट, स्पेशली एन अमाउंट ऑफ मनी लीगली पेएबल इन डैमेजेस. तो बेसिकली क्वांटम ऐसे पैसे को कहते हैं, ऐसे एलिमनी को कहते हैं जो किसी को लीगली किसी और को पे करना पड़ता है, ठीक है? दैट इज अलाउड कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे इनको हर महीने इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर द डैमेजेस, या आपको इनको साल भर में इतना पैसा देना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द क्वांटम इन दैट केस. ओके, ऑल राइट. डेलेटीरियस देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. उससे पहले आई विल जस्ट क्विकली रीड द स्टेटमेंट्स. If you keep giving toxic speeches, it's better to get used to defamation cases. Very nice, Alpesh. Good job. Very nice. I seriously suspected all their pattery branding it half-hearted conspiracy, mistrust, and defamation. Uh,
Okay, so you suspected all of it, including the defamation. लेकिन आयुषी इसमें defamation का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, right? So, but statement is obviously great. Alpesh, Pakistan is going through economic perils. Very nice, Alpesh. Good job. Very nice. Defamation is a crime and it's very common thing in film industry. Very nice, Nishita. Good job. No grammatical errors. Good job. Okay, Ayushi, I had never deliberately chosen the perilous or demanding path. Very nice. Perilous path. Perilous is full of danger. Okay, so perilous will be the adjective form iska that Ayushi has made is the adjective form. राइट किसी चीज का अगर ऐसा पाथ के लिए यूज कर रहे हैं या एक कोई भी जर्नी के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेंजर इन्वॉल्व है विच इज रिस्की एंड क्वाइट डेंजरस क्वाइट फेटल सो उसको हम पेरिलियस पाथ कह सकते हैं वेरी नाइस ओके I had never deliberately chosen the perilous or demanding path. Yoga Triranga, is defamation criminally punishable according to Chinese law? Good thing to wonder, Triranga. Very good thing to wonder. Good statement. Um, Alpesh, judge claimed the evidence dodgy. Very nice, Alpesh. Good job. Park is the place where we always use to see a where we always see perilous conditions. Okay, where we always see perilous conditions. Nishita, good job. The law of defamation is complex and the boundaries sometimes blurred. Very nice, Uzmaki, very nice. To have escaped the endless hunger and oppression, the perilous mines, the lash of our final head pacemaker. Sorry, peacekeeper. Okay, very nice, Ayushi. Manas, she spoke with conviction, her words ringing out clear and strong, leaving no doubt in the minds of her listeners. Very nice, Manas. Good job. He was convicted in 5 year felony charges. 5 felony charges, sorry, 5 year. I'm saying 5 felony charges. Very nice, Alpesh. Good job. He played off streak is her playoff streak is in perils, okay, is in perils um this season, okay, is in perils this season, is in peril this season. Correct, Triranga. Don't you even okay, so Nishita has written don't you ever, okay, don't you even यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद think of being dodgy with me or get ready to say hello to God. Okay, very nice, Nishita. He was convicted with 5 year felony charges. ये मैंने पढ़ लिया. The polyjuice stuff sounds a bit dodgy to me. Very nice, Ayushi. There are a few dodgy moments in my parents' anniversary. Very nice, Triranga. Good job. Now, पेरेंट्स में यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होगा रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट्स राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल तो प्लूरल का जब अपोस्ट्रोफी पोजेशन होता है तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगता है राइट सो इट शुड बी आफ्टर द एस okay Triranga. His conviction involved money and jewelry. Very nice, Ayushi. They are not trying to palm you off with dodgy clothes. It's just their particular method of stock keeping. Very nice, Akarshan. Good job. And dodgy is basically British word, okay? Generally, dodgy is used by Britishers, okay? Very prevalent over there in their English. In yesterday's case, yesterday's apostrophe s, yesterday's case, Supreme Court judge uh, convicted
that my ex is a dog. Oh, Nishita. All right. Alpesh, breach of contract often lead to a person to pay quantum. Breach of contract often leads leads a person to pay quantum. Very nice, Alpesh. Good job. We all need a quantum amount of money to live our life with dignity. Very nice, Nishita. After Rahul Gandhi was convicted for defamation, opposition was left in perils and felt something dodgy about the move made by BJP. Fire hai fire. Very nice, Alpesh. Good job. Self-proclaimed, but yes, it is definitely a very good statement. The appointment of a female director is a quantum leap for women's equality. I am going to Trivanga. Now this quantum leap that you're talking about is basically a huge leap is what you mean over here, right? लेकिन quantum का जो use हम यहाँ कर रहे हैं is the usage that Alpesh has done. ठीक है? Ayushi, for every event at the quantum level, the current universe splits into multiple universes. Very nice, Ayushi, but again, a different quantum than the quantum that we are talking about. Good job. I am the judge in Supreme Court, so don't you dare uh, defamate or don't you don't you dare to do defamation or you have to face a perilous situation. Okay, don't think about defamation or you will have to face a perilous situation. Nishita, good job, you tried really well. Deleterious is basically an adjective जिसका मतलब होता है required or allowed amount, especially an amount of money legally payable in damages. कोई भी एक certain amount जो होता है. Oh God, no, that is not deleterious. I am so sorry. This is wrong. I have accidentally put the same definition over here. Let me change the definition over here. Oh God. It's a very simple. That is deleterious is also related to damages, but इस sense में नहीं, ठीक है? इसका मतलब होता है कहाँ लिखूं? Okay, causing harm or damage. An adjective is absolutely right. Deleterious over here is इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है causing harm or damage. कोई भी चीज ऐसी चीज जो या तो बहुत ज्यादा हार्म करती है या डैमेज करती है इज कॉल्ड डिलीटीरियस. ओके, सो डिलीटीरियस इज अ वेरी इजी वर्ड. एडजेक्टिव है तो आप बना सकते हो डिलीटीरियस सिचुएशन, डिलीटीरियस मोमेंट, डिलीटीरियस बिहेवियर. यू कैन यूज इट इन एनी वे, है ना? Yes, injurious, hurtful would also be deleterious, right? Last word of this page is restore, which means bring back, to reestablish, or to reestablish. Okay, so basically किसी चीज को restore करना मतलब उसे पहले के condition में वापस से ले आना, right? या उसको वापस से establish कर देना, या पहले जैसा था वही situation में उसको हमने वापस से रख दिया. That means restore कर दिया. Okay, so buildings are restored. Okay, furniture is restored. So कोई भी चीज जो खराब हो गई है उसको आप वापस से उसके शाइनी कंडीशन में ले आए तो यू हैव रिस्टोर्ड इट्स कंडीशन, रिस्टोर्ड द पीस ऑफ माइंड. ओके, सो बेसिकली अगर आप मेंटली या फिजिकली किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी चीज को वापस से उसी सिचुएशन में ले आती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोर. So we did the words defamation, perils, dodgy, conviction, quantum, deleterious,
restore in this slide. Moving on to the next one. Next is irrevocable. Irrevocable का क्या मतलब होता है? Irrevocable is an adjective जिसका मतलब होता है not able to be changed, reversed or recovered. Something that is final. So कोई भी ऐसी चीज जो जिसको हम वापस से ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही रिवर्स कर सकते हैं वो सिचुएशन की। चलो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं वो ये वापस ले लेती हूँ, सिचुएशन ठीक हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है इसके साथ, या रिकवरी भी नहीं हो सकती है। इररिवोकेबल इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं होती है, रिवर्स नहीं हो सकती है, या समथिंग दैट इज फाइनल। ओके, अब इससे ज्यादा अब कुछ नहीं हो सकता, इसका ये फाइनल हो गया, ये लॉक हो गया। ओके, इज इररिवोकेबल। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्राइव। डिप्राइव बहुत कॉमन वर्ड है, ये सारे वर्ड्स बहुत अडियर भी हमने पहले देख लिया है। ऑलराइट, सो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉमन एंड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। सो इसमें जितने इस पेज में जितने भी वर्ड्स हैं ऑल आर कॉमन, मोस्टली कॉमन एंड prominent words like prohibit, remedies, harass, okay, lamentable, lament से आया है lamentable, absurd, all these are common words, है ना, है ना। precedents, precedents, predecessor, precedents, okay, so all these are common words, बहुत common लेकिन बहुत important words है, बहुत ज्यादा use होते हैं, right? So sentences, okay, don't shy away from making sentences. All right, I am the judge in Supreme Court, so don't you dare होना चाहिए यहाँ पर निशिता। या निशिता is angry today for some reason. मुझे भी डर लग रहा है निशिता, what is happening? इतने सारे I will see you, don't you dare ऐसे वाले स्टेटमेंट्स आज ज्यादा आ रहे हैं निशिता के। Oh, very happy. Oh, this is your very happy statements, निशिता। बच के रहना चाहिए आपसे तो। आयुषी, the quantum of time isn't a measure that concerns me. Again, this is Ayushi, this is also about the quantum, the other quantum of time, right? Um, so, but okay, that is okay. Manas, the overuse of pesticides has a deleterious effect on the environment, causing harm to wildlife and disrupting the delicate balance of ecosystem. Very nice, Manas. Good job. Triranga, sorry Ramesh Babu, but yours wife's nahi hoga. Your wife, okay? Sorry Ramesh Babu, but your wife's cooking is deleterious to health. Good job, Triranga. It was you who deleteriated his image, deleteriated his image. Now it's your responsibility to restore it. Very nice, Alpesh. Very nice. There are those who think that all histrionic art is useless, that it is even deleterious to character to assume a part. To character to assume a part. यहाँ पर TOO होना चाहिए. To character to assume a part. Okay. Uzmaki, sugar is deleterious to the system of the body. Very nice. Good job. Sugar is deleterious to the body. Okay, that is it. Deleterious to the body. System of the body. इतना नहीं करने की जरूरत है. Okay. When the deleted files were stored, the tables were turned by the advocate. Very nice, Manas. Tables are turning
Indeed, good job. The judgment of Supreme Courts are generally irrevocable. Very nice, Alpesh. Good job. The image of everyone's ex is irrevocable. Yes, very nice, Nishita. Alpesh, you must restore normal services without delay. Of what, Triranga? What is he providing that you want? What services are we talking about? Manas, the decision to quit his job was was irrevocable, and he knew there was no going back once he had submitted his resignation letter. Very nice, Manas. Good job. Ayushi, in most video games, there was some way to restore life force after you have been weakened and play on. Very nice, Ayushi. Good job. Uh, Ignorance could lead to immense, irrevocable human losses. Very nice, Uzmaki. Hi, Kathamrita is also here, and unless we lay down some sort of precedent, none of our guests will ever leave again. Very nice, Kathamrita. Alpesh, if someone is refrained from their fundamental rights, law ensures justice adhering to constitution. So you have reached adhere. Very nice. Um, there is no real anger and nothing irrevocable. Very nice. When my friend said, "Please don't deprive my things," I do the same. Don't deprive my things is don't touch my things. Don't deprive me of your love, Nishita. Okay. So when my friend says, "Don't deprive me of your love," I do the same. Okay. I don't deprive her of the love. Okay. So love, Nishita. Love is a word. Okay. Shritama, no one should be deprived from their rights based on some absurd logic. Very nice, Shritama. Absurd capital nahi hoga, but the sentence is perfectly right. Lawyers generally use past cases as precedents to fight similar cases. Very nice, Alpesh. Good job. You make a lot of law-related statements, and it is definitely going to help you, Alpesh. I'm telling you, in the future, when you get into the NLU, any one of the NLU colleges, टॉप एनएलयू कॉलेजेस, तब जाके आपको समझ में आएगा हाउ मच दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. इट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली. शराब शराब deleterious for us. Yes, Surendra, deleterious for you, definitely. Alcohol लिख दो at least. Alcohol is deleterious for us. I have an adherence. Okay, A से शुरू हो रहा है. So अगर इसके आगे एक पर्टिकुलर चीज दिखाना है एंड इट इज इनडेफिनिट आर्टिकल, तो एन लगेगा यहाँ पर. ठीक है. Shritama, I did not. I read no one should be deprived from their rights based on absurd logic. I just read. They found themselves in chamber of water, deprived of the sun that had brought them there. Very nice, Ayushi. Manas, uh, Nishita, what is your obsession with your ex today? No, Manas, it is not today. It is every day, and we are all okay with it. We are all okay with it. Always, I think it is a cathartic experience for Nishita, so let her emotions flow, whatever she wants to say. Alpesh, India sends remedies to the calamities stricken countries. Very nice. Alpesh, India में I capital कर देना. Over teachers always, our teachers always said that work hard and try to learn from your precedent work. Very nice, Nishita. But our teacher, यहाँ apostrophe s नहीं लगेगा. ऑलवेज से बिकॉज ये एक चीज है जो वो हमेशा कहते हैं, है ना. तो जब वो हमेशा कहते हैं ये चीज, दैट मीन्स इट इज समथिंग दैट इज अ रूटीन, है ना. तो इसीलिए सिंपल प्रेजेंट. ऑल राइट.
It sounds like a drag as though it requires you to deprive yourself. It sounds like a drag. Mean dukse. Okay. When I was watching Full Metal Alchemist, I have, I mean, generally animes, whenever I watch, I try watching it in Japanese. But when I was watching Metal Alchemist, which is a beautiful anime, if anyone has watched, good job. Because it has got a lot of philosophical value, and obviously, um there was this gluttony was one of the sins, right? So gluttony always used to say such a drag, and that was mindukse. So I learned mindukse from there. So now anyone says such a drag, I just think of mindukse. Anyway, um I think that there needs to prohibit. Okay, Kathamrita, it is lamentable that today's youth seem to have no respect for their teachers. It is lamentable, isn't it, Kathamrita? I mean, no, they do have a lot of, but a good statement. Very nice, Kathamrita. Hello, Hanaya. Long time no see. Where have all of you been? I think you just come out of class. All of you together. Shritama, the result is irrevocable, but no worries, you won't be deprived from giving CLAT, even if you didn't do it well. You aren't prohibited from giving CLAT. Very nice, Shritama. Very nice. Even wild dogs have to learn to adhere to a certain set of rules. Wow, Uzmaki, very nice. Very nice. क्या statement बनाया. Even wild dogs have to learn to adhere to a certain set of rules. Very nice. The blue roses of her flannel nightgown adhere to her damp filth. Very nice, Ayushi. It looks like from Pride and Prejudice time. Okay. But Alpesh, she found it absurd because the kid called her auntie. I do find it absurd. Yeah, very nice, Alpesh. Good job. Alpesh, okay. Bigamy a prohibited in India. Bigamy is prohibited in India. Not really, but okay. Uzmaki, good sentence. Is a prohibited nahi hoga. Is a prohibit in India. Okay, is a prohibit, then it is fine. I'm sorry, I read it wrong. Alpesh, nothing. Nishita, nothing. Hanaya, okay, ma'am, if possible, you can please change the time to. Hanaya, Raghavendra sir is going to change the time to 10:45. We had a meeting and Raghavendra sir said that he will be changing the time to 10:45 instead of 12. Okay, so he will be doing the honors for you, so please ask him to start doing it as soon as possible. Okay, all right. I'll All right, Kadhamrita, why the people are supposed to stick to some absurd things like cartoons and animes, because these things make no sense in reality. My God, Kathamrita, you did not just start a war over here. I am not taking this lightly. You cannot call them, you cannot put cartoon and, first of all, you cannot put cartoon and anime in the same category altogether, because they are two different things, and you cannot, definitely not, insult people like us. It makes no sense to you. Good for you, but it makes a lot of sense to me. Okay, that's my religion. What are you talking about? Okay, all right. Uh, Not that my, I mean, I'm
I just watch everything anyway. So moving on to the next set of words, jaldi jaldi khatam karte hain, and let's move on to the, I think you have made statements with everything already, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से meaning बता देती हूँ. Adhere is to believe in and follow the practices of. कोई भी चीज को adhere करना, to believe in या follow the practice of. Okay, so adhere to. Okay, um, precedence is an earlier event. कोई भी precede करता है, that is an earlier event or action that is regarded as an example or guide to be considered in subsequent or similar circumstances. So अगर आगे भी ऐसा कोई case आता है, तो they use that something that has happened in the past as a circumstance to extrapolate the information. Remember, we did extrapolate last class. So in the same way, precedence is also something that is learnt in the past and applied in the next situation. Extrapolate is taking a situation result and applying it in the so they are sort of similar, synonymous, precedence and extrapolate. Prohibit is, but this is mostly restricted to time where it is supposed to be done in the past, and extrapolate is also about the time. ठीक है, कोई नहीं. Prohibit is formally forbid. ना मतलब ना. Okay, that is prohibit by law, rule or other authority. कोई भी formally ना बोलता है आपको, formally ना बोलना is to prohibit करना. Remedies is basically कोई भी चीज का. Demon Slayer, mine is One Piece, Naruto, Full Metal Alchemist. I like Claymore as well, but anyway, very nice. Okay, then it is fine, Kathamrita. Then it is absolutely fine. If you're joking, then it is absolutely fine. You're still one of my favorite students. Otherwise, I am taking you off the list. Okay. Lamentable is basically अगर harass करना मतलब किसी को subject करना aggressive pressure और intimidation से. So या तो किसी पे बहुत ज्यादा दबाव डालना या तो किसी को बहुत धमकाना is to harass करना. बहुत ज्यादा aggressively उनको pressurize करना या धमकाना, डराना धमकाना is harass करना. लैमेंटेबल इज बेसिकली अगर हम किसी सर्कमस्टांस या कंडीशन की बात करें तो बहुत गंदा कंडीशन. ओके, इज अ लैमेंटेबल, वेरी सॉरी स्टेट. ओके, इज लैमेंटेबल कंडीशन. ओके, डिप्लोरेबल स्टेट इज द लैमेंटेबल कंडीशन. अब्सर्ड का मतलब क्या होता है कि इट मेक्स नो सेंस, दिस इज अब्सर्ड. ओके, सो इलॉजिकल, अनरीजनेबल और इनअप्रोप्रिएट अगर कोई चीज होती है तो उसको हम अब्सर्ड कह देते हैं. बेसिकली उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इट मेक्स नो लॉजिकल सेंस, तो दैट इज कॉल्ड अब्सर्ड. ठीक है, कि फालतू बात है लेकिन उसमें कोई कोई मीनिंग नहीं है, इज अब्सर्ड. लेकिन नहीं, उसमें कोई मीनिंग नहीं. ऑल राइट, I don't want to miss either of the class. I was very stressed, but thanks to you and Raghavendra sir. Here for you, baby. I wanted to say baby, but no. Here for you, darling. All right. Sometimes absurd sentences are needed because it teaches us that we have to laugh. Very, very nice, Nishita. Very nice. And that's why Nishita uses absurd statements. Okay, so stop picking on her, everyone. Nobody's picking on her. I have only watched One Punch Man in anime universe. Okay, good job. At least you've watched One Punch Man. That is also kick-ass. One of my favorite students, I said, I will keep all of you. You all are my favorite students, Nishita. If it is not apparent till now, you, Alpesh, Kathamrita, Triranga, Hanaya, Ayushi, Akarshan, else is there. All right.
All right. Ishant, yes, definitely Ishant. Definitely Ishant. अब अविशी भी है. So my favorites is growing in number. Favorites are growing in number. All right, moving on to the announcements. Very less announcements. अब हमारे पास remember अब आपके पास बस 12 घंटे बच गए. Only 12 hours to avail this offer. So please make sure कि अगर आप ये if you are making use of the discount that is flat 25% off on your all CLAT subscription, all subscription, okay, जितने भी CLAT के subscription हैं उसमें 25% flat off मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे which is VAISHNAVI to subscribe to Vaishnavi 10 to subscribe to any of those batches या कोई भी batch में enroll कर रहे हैं तो आपको flat 25% off मिलेगा and this offer is only valid for 12 more hours. So hurry up. खत्म हो गया है हमारा अप्रैल मंथ का मॉक का कैलेंडर. आई होप एवरीवन गेव यस्टरडेज मॉक. कैसा गया बताओ मुझे. 23rd अप्रैल वाला मॉक आई होप एवरीवन गेव. And I just want to know how did it go because I will be doing mock analysis of this one, I think. Sure. Um, और प्लस के लिए एक और मॉक बच गया है that is happening on the 30th of April. So make sure that you make use of that. I did. Uzmaki, you too. Of course, Uzmaki. You too. All of you. I mean it. I'm not kidding. All of you. All of you are my favorites. Not one, not two, all of you. All those who are consistent in my class are my favorite. New ones, I'm yet to know them. तो अभी तो मुझे बहुत आपके sentences से I've got to know so much about you already in just a matter of 2 months. I'm collecting all that information. Don't you worry. I remember everything. Nothing is forgotten from here. Okay, so ACE Legal is a batch which is a beginner's batch which is for CLAT 2025 aspirants. I will be taking English language in this batch. So if you are enrolling in this batch, अगर आप अगले 12 घंटे में enroll कर लेते तो आपको flat 25% off मिलेगा if you use my code that is Vaishnavi 10 मेरा कोड है. अगर आप ये यूज करेंगे स्टोर में जाके enroll करने के टाइम तो you will get flat 25% off on enrolling in this batch. Warriors batch एक droppers batch है for CLAT 2024 aspirants and if you want to enroll in this batch you can do it within 20 if you do it within 12 hours. I am taking English language in this batch so you can use my code Vaishnavi Vaishnavi 10 is my code. Vaishnavi Pandey. Okay, Vaishnavi 10 is my code and 25% off मिल सकता है आपको if you use my code. Okay. So please make sure कि अगर आपको आप ड्रॉप लिया आपने और इस साल आपको क्लैट निकालना है तो the Warriors is the perfect fit for you. All your favorite educators are also taking class. So do enroll in this batch. चलते हैं हम आज के editorial की तरफ. Can we get started? Oh my God. Lawyers, hurr, and all that is happening. Where is the Jaja and all? कहाँ कौन से कोर्ट के लॉयर हो भाई आप लोग. कौन से फ्यूचर लॉयर हो. uh, you missed out the word Vishu. My God, you guys are funny. Now
कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। बहुत हो गया, आपने बहुत झगड़ा कर लिया, आपने बहुत लड़ लिया हुर और फुर फुर बोलकर। नाउ कमिंग बैक टू द क्लास, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास, डू नॉट फॉरगेट योर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव नहीं भूलना है। क्या करने आए हो यहाँ पर? पढ़ने, राइट? बहुत हो गया, अब लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल। सीरियस हो जाते हैं अब, ठीक है? All right. So defamation perils is the headline, the title. Okay, the title is defamation perils. A dodgy case is being used to keep Rahul disqualified, Rahul Gandhi disqualified. It is saying ये क्या हो गया, ये इसका conclusion हो गया. Author ने opinionated conclusion दिया है कि unopinionated conclusion दिया है? Definitely opinionated conclusion दिया है, right? So that means इस passage का या तो positive या negative होगा, right? This becomes the conclusion. Okay. A striking feature of the Surat District's court order declining to stay the conviction of Congress leader Rahul Gandhi is its unusual emphasis on his status as a member of parliament to justify his conviction and quantum of his of punishment. तो अभी एक स्ट्राइकिंग न्यू केस आया है. कहाँ से आया है? सूरत से आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है to stay the conviction. Stay the conviction, स्टे कन्विक्शन पे को डिक्लाइन कर दिया है. किसका स्टे कन्विक्शन था? राहुल गांधी का था कि उन्होंने क्या किया है, इट्स अनयूजुअल एम्फेसिस ऑन हिज स्टेटस एज, और ये क्या कर रहे हैं, क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्या बोल के कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. अपना कन्विक्शन जस्टिफाई करने के लिए क्या कह रहे हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनका जो पनिशमेंट होगा वो कहीं ज्यादा होगा देन कि नॉर्मल जनता का punishment. Okay, so this is the main idea, isn't it? This becomes the main idea of the passage. Now moving on to the next rest of the passage, it is quite evident from a reading of 8th additional session Judge Robin P. Mogra's order that the court deems an offence to be worse if by a legislator, that its impact on society is more deleterious than when it is committed by any other citizen, and that a harsher sentence than normally imposed is justified against a lawmaker. So basically ये जज रॉबिन का स्टेटमेंट को बताया गया है कि व्हाट हैज ही सेड, एंड इट हैज जस्ट पुट इसी चीज को बस सिंपल एक्सप्लेन कर दिया गया है जो यहाँ पर बोला गया था कि उन्होंने क्या कहा है कि सिंस वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सॉरी, ये क्राइम जो कमिट किया गया है ये एक लेजिस्लेटर ने कमिट किया है, तो इसीलिए वो सोसाइटी पे, क्योंकि वो उनका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे कहीं ज्यादा देन नॉर्मल पर्सन, तो उनका उनका क्राइम भी कहीं ज्यादा कंसिडर किया जाएगा देन अ नॉर्मल पर्सन, और उनको हार्श कन्विक्शंस का सामना करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट वाज the author is trying to say कि जज रॉबिन के इस स्टेटमेंट से पढ़ने, 8th एडिशनल सेशन के स्टेटमेंट से पढ़ने से समझ में आ जा रहा है कि ये जो किया गया है ये बोला है इन्होंने, ठीक है. येट मिस्टर गांधी स्टेटस एज अ पार्लियामेंटेरियन मैटर्स लिटिल व्हेन इट, अब देखो अब यहां से ऑथर हैज स्टार्टेड गिविंग हिज ओपिनियन, लेकिन मिस्टर गांधी का जो पार्लियामेंटेरियन मैटर है, सॉरी स्टेटस है, वो बहुत कम मैटर करता है. जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कन्विक्शन है ये स्टे होना चाहिए या नहीं स्टे होना चाहिए, ओके, सो तब ये मैटर बहुत कम रेलेवेंस का हो जाता है. His 2-year prison term awarded by the magistrate court in Surat for allegedly defaming the collective of people who have Modi as their surname has led to this disqualification from his membership of the Lok Sabha. तो उस ये जो
2 साल का उन्हें जेल हुआ, ठीक है। ये किसने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको दिया फॉर हिज स्टेटमेंट दैट ही हैड मेड, जो वो स्टेटमेंट अलेजेडली उन्होंने स्टेटमेंट बनाया था, उसके ऊपर इनको एक तो 2 साल की प्रिजन टर्म मिल गई और उसके बाद इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है लोकसभा से, while his sentence has been suspended till disposal of his appeal against his conviction. Only a stay on the operation of his conviction could have restored his membership of the house. So अगर इनको स्टे मिल जाता, ठीक है, जो डिक्लाइन कर दिया ये सूरत डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन अगर इनको स्टे मिल गया होता तो इनका कन्विक्शन, तो इनका लोकसभा में इनका वापस से इनका मेंबरशिप रिस्टोर हो जाता, ठीक है, वापस से आ जाता इनका मेंबरशिप, वही मेंबरशिप आ जाता। जज मोगरा has ruled that Mr. Gandhi failed to demonstrate that he will suffer irreversible and irrevocable damage if his conviction, which has also deprived him of the opportunity to contest election, is not stayed. तो जज मोगरा क्या कहते हैं कि क्यों उन्होंने उनका स्टे ऑन कन्विक्शन नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे थे अपने एक्शन से कि वो ये जो डैमेज उन्होंने कॉज किया है ये वो कभी नहीं करेंगे, तो वो उनके में सॉरी फीलिंग नहीं दिख रही थी, इसीलिए उनका कन्विक्शन स्टे करने के लिए डिक्लाइन कर दिया उन्होंने, और कह रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके, इट इज, और ये जो अपॉर्चुनिटी उनकी और एक अपॉर्चुनिटी चली गई है कि वो इलेक्शंस में भी कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। सो दैट इज अनदर थिंग दैट इज going wrong with Mr. Gandhi. Selectively quoting from Supreme Court's judgment, the judge has held the disqualification for being a legislator cannot be described as irreversible damage. तो selectively क्या किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सिलेक्टिवली लेकर उन्होंने क्या कहा है कि द जज हैज हेल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अ लेजिस्लेटर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज इरिवर्सिबल डैमेज। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट को लेके देखा जाए तो ये वो जो जज हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो लेजिस्लेटर से है, ये इसको हम इरिवर्सिबल डैमेज नहीं कह सकते हैं, ओके, ये इरिवर्सिबल डैमेज नहीं है, तो ही हैज नॉट सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम इन्फर्मिटीज इन रीजनिंग। नाउ अगेन द ऑथर स्पीक्स, अब फिर से ये ऑथर का ओपिनियन आ गया है, राइट। सो द ऑथर सेज द ऑर्डर suffers from infirmities of in reasoning and does not always adhere to precedents that do not prohibit treating disqualification from electoral contest as an exceptional circumstance warranting stay of conviction। तो ये इस जो जजमेंट है इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मिटीज है, और ये कोई भी पहले ऐसे कोई भी केस नहीं हुआ था जिसमें इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट से उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, क्योंकि वो उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो ऐसा कोई पहले सर्कमस्टांस नहीं हुआ था। द ऑर्डर होल्ड्स दैट द complainant being a former minister would have suffered harm to his reputation by Mr. Gandhi's remarks. So अब जिनके बारे में भी इन्होंने बोला है उनके वजह से ये जो मिस्टर गांधी के रिमार्क्स से उनकी रेपुटेशन को बहुत आँच आई है, ओके, उनके रेपुटेशन को बहुत आँच आई है। हाउएवर इट फेल्स टू सी दैट द कन्विक्शन फॉर डेफेमेशन इज इटसेल्फ क्वाइट रेयर। और लेकिन ये तो देख ऐसा पहले कोई केस ही नहीं हुआ, ये कह रहा है कोर्ट की, पहले ऐसे कभी नहीं किया गया कि किसी के फॉर्मर मिनिस्टर के रेपुटेशन पे इतना बड़ा धब्बा और दाग लगा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि कन्विक्शन फॉर डेफेमेशन इज ऑल्सो क्वाइट रेयर एंड 2 year पनिशमेंट रेयर, ठीक है। एक तो डेफेमेशन के लिए पनिशमेंट मिलना रेयर होता है, कन्विक्शन मिलना रेयर होता है, ऊपर से 2 साल की सजा ये और रेयर है।
The judge justifies the maximum sentence by claiming that the words of a sitting member of parliament will have a larger impact on the public and the sentence is permissible in law. तो जज ने क्या कह दिया है कि ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा लोगों के ऊपर, इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस दिया है, दैट इज 2 years, दैट इज मैक्सिमम, और ये परमिसिबल इन लॉ है, तो इसीलिए मैं ये करूंगा भाई. ओके, दैट इज व्हाट द जज हैज सेड. क्रिमिनल डेफेमेशन इज इटसेल्फ अ क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट. अब ऑथर अब फिर से बोल रहा है ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन है ये तो बहुत क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट ही बहुत क्वेश्चनेबल है, ठीक है. एज इट कैन बी इन्वोक्ड टू साइलेंस क्रिटिसिज्म एंड हरास ओपोनेंट्स. तो ये कभी भी इसको हम यूज कर सकते हैं. क्यों ये बहुत ही क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं अपने ओपोनेंट्स को हरास करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए, या उनको उनकी उनकी क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने के लिए हम ये कभी भी यूज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई द ऑथर इज सेइंग कि ये बहुत ही क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट है. इट इज इनकंसीवेबल दैट political remarks made in an election campaign are used to secure a conviction for defamation and a jail term that precisely matches with the legal requirement to disqualify a person. Mr. Gandhi has further legal remedies such as appeal to the High Court, but it is lamentable but that in a democracy, a dodgy defamation case can be stretched to such absurd levels as to deprive the parliamentary opposition of a key figure. तो बेसिकली ऑथर क्या बोल रहा है कि मिस्टर गांधी, अब ऑब्वियसली ये तो ये किस कोर्ट में हुआ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, राइट, दिस हियरिंग. तो मिस्टर गांधी के पास ऑप्शन है कि वो केस को फर्दर ले जाए, हाई कोर्ट में ले जाए और अपील करे हाई कोर्ट में. लेकिन ये केस को देखा जाए तो यही बहुत दुखद बात है कि इतनी छोटी सी और इतनी डॉजी सी केस, ओके, ऑफ डेफेमेशन, जो अनरिलायबल सी केस है डेफेमेशन की, वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, इतने अब्सर्ड लेवल पे, इतने फालतू के लेवल पे स्ट्रेच हो सकता है, या अब्सर्ड लेवल पे स्ट्रेच हो सकता है, जस्ट टू डिप्राइव, बस ताकि पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन और किसके साथ हो रहा है? ये पार्लियामेंट के ऑपोजिशन के की फिगर के साथ हो रहा है. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी अब्सर्ड टू सी. ये बहुत ही वियर्ड केस है, ये बहुत ही लैमेंटेबल केस है. दैट दिस हैज टेकन, दिस इज द ऑथर इज सेइंग दैट दिस इज सच अ सॉरी सिचुएशन कि हमें ये देखना पड़ रहा है. ओके, so that is the entire passage. Now let's go on to the tone of the passage. What would be the tone of the passage? But the author is not demeaning. Author demean कर रहा है क्या? ऑथर का कैसा टोन है? टोन किसका हम बताते हैं? ऑथर का टोन बताते हैं. तो ऑथर किसको डिमीन कर रहा है? प्रोसेक वुड बी डल एंड commonplace. नॉट रियली आयुषी, यहाँ पर प्रोसेक भी नहीं होगा. बिकॉज दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, राइट. ये जो केस है ये पहली बार, दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर. ये 2 साल की जो सजा मिल रही है दैट इज इवन रेयर बोल रहा है, राइट. ये तो इटसेल्फ इज क्वाइट रेयर की कन्विक्शन फॉर डेफेमेशन हो रहा है. अब इससे 2 साल की सजा भी मिल रही है, दैट इज इवन रेयर. तो इट इज नॉट समथिंग दैट इज कॉमन प्लेस, हम नहीं बोल सकते हैं. एनी अदर आर्ग्यूमेंटेटिव, आई गेस. अच्छा, ओके. हम्म, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, डेफिनेटली. ओके, रिमोर्सफुल हो सकता है. ओके, रिमोर्सफुल हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, इंफॉर्मेटिव नहीं होगा.
कॉस्टिक भी नहीं होगा बिकॉज द ऑथर इज नॉट यूजिंग वेरी हार्श स्टेटमेंट्स ओवर हियर, ठीक है, कि दिस वाज फूलिशनेस या ऐसा कुछ कोई भी एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज किया, तो इसीलिए हम इसको कॉस्टिक और इंडिग्नेंट नहीं बोल सकते. द ऑथर इज नॉट एंग्री, सो इट कैन बी आइदर रिमोर्सफुल और आर्ग्यूमेंटेटिव. ओके, और यू कैन ऑल्सो से पर्सुएसिव अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आप ये सारे टोन्स नहीं यूज कर सकते. बेसिकली द ऑथर बहुत बोल रहा है कि क्या सिचुएशन है यार, कैसा ऐसा ऐसा टाइप का ऑथर का कंडीशन है, राइट, दैट दिस इज ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट, राइट, दैट कि ये सब हो रहा है, इस एक्सटेंट तक हो रहा है. ओके, so he's shocked and appalled as well. It can be shocked and appalled, but it cannot be. Yes, the author can be shocked. Perturbed is the actual tone. Okay, perturbed, that is concerned. Concerned है आज का टोन, perturbed. Okay, this would be the correct tone. Perturbed मतलब होता है concerned. The author is highly concerned कि क्या situation हो गया है हमारा, क्या situation हो गया है इस केस का. Okay, so highly concerned. Okay, आयुषी, क्योंकि सारे टोन जब स्पेशल क्लास में करा दोगी तो प्लस क्लास में क्या करोगे? No, nothing like that. The time that we had, टोन्स अभी स्टार्ट ही हुए, probably अब होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, तो इट इज नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट हम टोन्स करने वाले हैं. फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा, पार्ट 2 आएगा टोन्स का, देन पार्ट 3 आएगा टोन्स का, एंड देन रीकैप ऑफ टोन्स आएगा, तो आप तब तक एकदम माहिर हो जाओगे टोन्स में. ऑलराइट, दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स फॉर अटेंडिंग द सेशन. आई विल सी यू अगेन in the plus class for the warriors and in the special session for your quiz of today. um, कल होगी क्लास लेवल अप की आदित्य, एंड शिवानी को भी बताना होगा, अदरवाइज शिवानी विल लीव ऑफ. वो पूरा उम्मीद छोड़ देगी. शिवानी, आदित्य, आई विल मेक अनाउंसमेंट इन द ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल कि कल हमारी क्लास होगी लेवल अप के लिए. ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. हैव अ ग्रेट डे. Adios. Auf Wiedersehen. Tschüss.